Hey everyone, welcome to the channel. So it has been long time. I know that I'm uploading this video, statistics. Okay. So today we are going to discuss about this topic, statistics. ठीक है, ये chapter रह गया था class 11 का. So let me cover this one. Okay. And I hope I'm properly audible and visible to you. Okay. And let me introduce myself first of all. So my name is Seema, that you know, and I'm from Jamshedpur, Tatanagar. And about my qualifications, I have done my BSc, MSc in Mathematics Honours, then after that B.Ed, qualified CTEC, and also some freelancing work right now I'm doing, and also working in one of the EdTech platform. It has been 3-4 years. Okay. Alright, so these are things about me, and let's see, statistics आज ये topic cover करते हैं, सारी चीज़ें है ना. तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा basic clarify कर लेते हैं. Let me discuss about data and all the things. Okay. So basics clear होना चाहिए क्योंकि आज के जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन डेविएशन, मीन मीडियन मोड जो फाइंड आउट करना है, सो उसमें बेसिक्स वाले फॉर्मूलाज भी अप्लाई होंगे. सो यू नीड टू नो दैट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या है, तो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल. सपोज आप लोग टेस्ट देते हो, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सो मार्क्स से आप स्कोर. सो सपोज दैट आई हैव कलेक्टेड दोज मार्क्स. ठीक है, मैंने वो मार्क्स कलेक्ट किया, तो दैट वैल्यूज, दैट मार्क्स दैट आई हैव, दैट इज नोन एज द रॉ डेटा. ओके, नाउ देयर आर वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट द डेटा. ये आपको पता है, जो बेसिक्स आपका लोअर ग्रेड्स में आप पढ़ चुके हो. व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू represent the data? Pie chart with the help of tally mark, bar graph, line graph, various things. Okay, and three major central tendencies are, that is mean, median, mode. Okay, so let's see that. Mean क्या है? You will see sometime in the question it is written arithmetic mean or average, both were the same thing. ठीक है, दोनों same है. So formulas क्या है? Let me discuss this. Mean क्या होता है? And that is denoted by x bar. इस तरह से denote करते हैं. So the formula is sum of all the observations, sum of all the observation divided by total number of observations. Okay, so everyone please note it down, these formulas. And if you remember this, then no need to write down. Okay. So one more thing, sum of the observation divided by total number of observations. Suppose आपके पास 5 values data given है, तो add किया sum and divided by 5 values लिया तो divide by 5. Okay. And yes, that is arithmetic mean, or sometime in the questions it is written average. Both are the same thing. Okay, don't confuse. Arithmetic mean लिखा हो या average. Okay. Now next thing is median. So let's talk about this also. Median क्या है? Okay, and it is denoted by capital M. Okay, so median, what is median then? So just remember in this, median means you have to find out the middle value of the data. Okay, middle value of the data. Middle term आपको देखना है जो भी आपके पास data given है. Okay, and one more thing, in this median you need to arrange the data. Okay, arrange the data मतलब कि जैसे कि mean में आपके पास 5 values का data आपने लिया है, 7 value कुछ भी, so there is no need for arrangement. Add किया, divide by जितना number of observation, that's it. But in median you need to arrange the data. Arrange मतलब either you can arrange in ascending order या तो descending order. उसके बाद middle term देखना है क्या है. Okay, जैसे example ले लेते हैं. अब इसमें भी जो भी data आपने लिया है या तो order हो रहेगा या तो even रहेगा. Let's see. Suppose odd values, odd data लिया. Odd data मतलब 5 observation लिया, 7 observations लिया, ये सारे है ना. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, एनीथिंग यू कैन टेक इट. ओके, सो कितने वैल्यूज हो? 1, 2, 3, 4, 5. तो और डेटा आप बोलोगे है ना. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने बताया, मीडियन मतलब होता है मिडिल टर्म ऑफ द डेटा. सो मिडिल टर्म क्या है? 5 है, तो 5 मीडियन हो गया, दैट्स इट है ना. तो 5 मीडियन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा. ओके, ना इन केस इवन रहेगा तब इवन भी ले लेते हैं, इवन डेटा रहेगा तब. ओके, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. 2, 3, 5, 8, 10. यहाँ तो 5 ऑब्जर्वेशन थे ना, एक और एक्स्ट्रा ले लिया, गए 12. ओके, अब यहाँ देखो, जैसे मैंने बोला मीडियन मतलब तो मिडिल टर्म आपको देखना है, बट यहाँ तो 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, 2 मिडिल टर्म मिल रहे हैं. अब क्या किया जाए? सो वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज. ओके, दैट इज ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6.5. So this is the middle term for this data, and for this it is this one will be the middle term. ठीक है. Okay, अब ये जो मैंने बताया मिडिल टर्म होता है मीडियन,
ये इन केस इफ यू फॉरगॉट द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला भूल गए तब क्या किया जाए, जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म देख लिया, यू गॉट द आंसर। अब फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं, है ना। क्या है फॉर्मूलाज, दैट इज n+1/2th टर्म। ठीक है, ये है आपका फॉर ऑड डेटा। ठीक है, एन क्या है, एन मतलब कि टोटल ऑब्जर्वेशन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो एन की वैल्यू 5 है। ओके, जस्ट पुट अप द वैल्यू ओवर हियर इन द फॉर्मूला। लेट्स सी 5+1 6/2, यानी कि थर्ड टर्म आपको आ रहा है, तो थर्ड टर्म आपने देखा, थर्ड टर्म इज नथिंग बट इट्स 5, सो यस वी ऑलरेडी गॉट द आंसर 5। देखा, सेम रिजल्ट है ना दोनों में। ओके, अब इवन की बात की जाए, अब इवन में कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन, सो वो फॉर्मूला है n/2th टर्म और n/2th प्लस 1th टर्म। आप देखो, अब दोनों का एवरेज निकाल दो। ओके, यहाँ भी डू द सेम थिंग ना। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू तो 6 है। लेट्स पुट अप द वैल्यू, 6/2 मतलब कि थर्ड टर्म आपको देखना है, यहाँ फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म देखिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं, तो देखा आपने सेम रिजल्ट आ रहा है ना। Okay, if you remember the formula, apply that. If you forgot the formula, then also no issue, you can just remember the definition, middle term होते हैं, and you will be getting the answer. Okay, alright, now let's see the next thing about mode. Mode भी समझ लेते हैं, ये क्या है mode, मतलब the most occurring element, मतलब कि जो भी आपके पास डेटा गिवन है, जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो देखिए। जैसे कि ये सेम डेटा में आप सपोज करो 8 3 बार है, ओके, 3 टाइम्स सपोज 8, तो 8 हो गया मोड, दैट्स इट। ओके, आई होप इट्स क्लियर, एंड दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस फॉर द अनग्रुप डेटा। ओके, अनग्रुप डेटा के लिए भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑन दैट केस एनी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। उसके बाद आगे आपका कंटिन्यूस, जिसमें क्लास इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी है, इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं, सिंपल अनग्रुप डेटा गिवन था, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड। Okay, I hope having no doubt regarding this simple basic था, I think you already remember about these things, just I'm recalling all these things। अब ग्रुप डेटा भी देख लेते हैं, उसके लिए मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन, ये सारे। ओके, नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें मीन मीडियन आपको फाइंड आउट करना होगा, और क्लास 10 में जो मीन मीडियन आपने पढ़ा था उसी को एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल बी पुटिंग यू वन लिंक, यू कैन चेक इट आउट, वॉच दैट वीडियो। क्लास 10 का रिविजन का वीडियो है फॉर दिस टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, उसके वीडियोस देख लेना, मीन मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो देन एक बार और ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूलाज देख। All right then. So statistics full chapter we are going to cover today. So as I've already told you, है ना, मैंने mean median mode बता दिया था for ungroup data also. So let's see about group data का भी formulas देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के topic पे आते हैं. Okay. So let me tell you, these are the topics we are going to cover today. That is mean deviation for ungroup data. Okay. So these are the entire topic of class 11. ठीक है, तो आप देखो अनग्रुप डेटा, देन फॉर ग्रुप डेटा के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, देन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो फॉर ईच ऑफ द टॉपिक मैं फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन प्रेफर एनी बुक, एनसीईआरटी, चाहे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, वॉट एवर बुक यू हैव इन योर स्कूल कॉलेज में, आपको जो भी बुक प्रेफर होता है उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मीन डेविएशंस में अबाउट द मीन और अबाउट द मीडियन। ओके, इसलिए मैं सारे मीन और मीडियन का फॉर्मूलाज एक बार सारी चीजें रिकॉल करवा दे रही हूँ आपको। ओके, तो चलो ग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूलाज देख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। ओके, मैं एक काम करती हूँ, I will put the link in the description for class 10, वो आप देख लेना, है ना। तो क्लास 10 का एंटायर रिवीजन का स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का ये सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड एक क्वेश्चंस हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। तो देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, समेशन जब भी रहा मतलब एड ऑल द वैल्यूज। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या है, मिड वैल्यू। ओके, नाउ अज्यूम मीन मेथड क्या है,
दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ऑफ ए। ए इसमें है आपका अज्यूम मीन। अज्यूम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपका एक्स आई जो वैल्यू दिया है ना मिड वैल्यू, उसमें जो मिडिल वैल्यू आएगा वो अज्यूम मीन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो बाय दिस मेथड you can find out the mean, okay। Then next is the step deviation method। ये आपका हो गया आपका continuous frequency distribution के लिए mean निकालते हैं। तब continuous मतलब जब भी, don't confuse, continuous मतलब जब आपका जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में वैल्यूज होंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, ये सारे क्लास इंटरवल रहे और फ्रीक्वेंसीज रहे, तब आप यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला to find out the mean, that is step deviation method, okay। the formula is a, मैंने ऑलरेडी बताया क्या है, ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस, है ना, कि अज्यूम मीन मिड वैल्यू देखते हैं। अब इसमें देखो एक न्यू आप एक्स्ट्रा है यू आई, ये क्या है, दैट इज एक्स आई माइनस ऑफ ए। अज्यूम मीन में भी तो आप फाइंड आउट करते थे, डिवाइड बाय एच कर देना। एच क्या है इसमें, क्लास साइज, यानी जो भी आपका क्लास इंटरवल रहेगा, जैसे 0 to 10 है तो डिफरेंस क्या है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 10। क्लास साइज क्या, 10 to 20 है तो 10, h की वैल्यू, okay। So like this we are going to find out the mean by any of the method, you can find out a direct method, assume mean and step deviation। Now next is the median, how to calculate the median। So this is the formula, I think you already know these formulas, just I'm recalling all the concept, ठीक है। तो ये हो गया आपका L प्लस एच। एल क्या है, लोअर लिमिट, यानी सबसे पहले आपको मीडियन क्लास कंसिडर करना होगा। डोंट वरी, व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस ना, तब ये सारी चीजें फॉर्मुलाज अप्लाई करेंगे ही, तब आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा, तो डोंट वरी, ओके, इफ यू फॉरगेट द दैट हाउ वी कैन अप्लाई इट, ओके। और देखो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड ना इजीली आप क्वेश्चंस बन जाएगा, फॉर्मूला पे बेस्ड रहता है, बस कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में रहेगा जो भी मीडियन क्लास है उसके पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। एन क्या है, समेशन ऑफ एफ, यानी कि लेट मी राइट इट डाउन, समेशन ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी जो भी वैल्यू है डिवाइड सारे को ऐड करो तो वो एन हो गया, और एन बाई टू निकालो, सो दिस इज एन, ओके। जो भी मीडियन क्लास आपने कंसिडर किया है उसका फ्रीक्वेंसी, एच तो मैंने बताया ही, क्लास साइज, ओके। So these are the formulas. So let's come to today's topic. जैसे कि क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। आज जितने भी टॉपिक्स हैं, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन। तो देखो these two formulas are there. Okay. सो लेट्स सी देन, सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड एक एक क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ओके। सो कीप योर कॉपी पेन रेडी विथ यू, है ना, साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ओके। ध्यान देना कि मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ ना, तो वो भी देखना, ठीक है। मे बी इन बाई चांस अगर हो जाए तो, है ना। ओके, सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक्स आई है मिड वैल्यू, एक्स बार है आपका मीन, फाइंड आउट करते हैं डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने, और ये मीडियन का फॉर्मूला, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चंस, ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई होगा। सो ये देखो सिंपली वैल्यूज गिवन है, मतलब कि ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चंस है। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूलाज भी लिख दिया है। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। All right then. So let's come to the question. As I have already discussed the formula mean deviation for the ungrouped data, है ना, अनग्रुप डेटा के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज है, अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन, ओके। देखो ओनली डिफरेंस इज दिस वन, यहाँ पर आपका जब मीन फाइंड आउट होगा तो एक्स बार की वैल्यू पुट अप करोगे, और यहाँ पर एम, अदरवाइज द फॉर्मूलाज आर सेम, ओके। सो लेट्स सी देन, फॉर ईच ऑफ द फॉर्मूलाज आई विल बी डिस्कसिंग वन वन क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, है ना। सो कीप योर कॉपी पेन रेडी विथ यू, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, है ना। Let's see then. So let me read the question. Find the mean deviation about the mean. So यहाँ ध्यान देना, about the mean बोला गया, यानी mean सबसे पहले तो find out करना होगा. And if you observe the data are given like it's a ungrouped data. और याद है कि मैंने ungrouped data के लिए क्या बताया था formula? Let me find out the first one mean, that is sum of all the observation divided by the total number of observation. यानी सारे values को add करो सबसे पहले. Okay, let's add 6 plus 7 plus 10. Okay, प्लस 12 13, सारे वैल्यूज को सिंपली ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। यहाँ n क्या है, यहाँ n देख रहे हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सो लेट्स काउंट हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सो डिवाइड करो 8 से, दैट्स इट। एंड व्हेन यू आर एडिंग दिस यू विल बी गेटिंग समथिंग अराउंड 80, okay, so 80 by 8 that is equal to 10, okay। Next thing, you have to find out xi minus of xi. What is xi over here? The values that is given, okay।
So let's see then. Let me use the different color. हाँ, so xi minus of x bar, यानी सारे वैल्यूज में आपको क्या करना होगा, ये जो मीन आपने फाइंड आउट किया है उससे 10 से सब्ट्रैक्ट करो. ओके, so let's subtract then. 6 minus 10, it will become minus 4. Then 7 minus 10, minus 3. Okay, xi यानी कि ये सारे जो वैल्यूज हैं. Okay, and the another thing we have, just a minute, let me. So the next thing we have, that is 10. 10 minus 10 will become 0. 12 minus 10 become 2. Then 3. 4 minus 10 minus 6. Then after that minus 2. Then 10. Okay, so ये हो गया आपका xi minus of x bar. Okay, now the next thing, mod. Okay, so mod of xi minus of x bar. It means you have to take all the positive values. So let's see. 4, 3, 0, 2, 3, 6, 2, 10. Okay, mod means you have to take all the values positive होना चाहिए, जो negative है उसको convert कर दो. Okay, now next thing, summation बोला गया, and you know what do you mean by summation, we need to add all the values. So let's add all the values, summation of mod of xi minus of x bar. So let's add all the value, it will become 4 plus 3 plus 0 plus 2 plus 3 plus 6 plus 2 plus 10. Okay, so let's solve the value by adding what you will get. Let's see. 7, then plus 3 10, then 12 plus 6 it will become 18. 18 plus 2 20, 30. Okay, so this is 30 you are getting, and now you have to substitute the form in the formula. That's it. Okay, let me do this over here. Okay, I hope this is clear, everyone. Let me write down the formulas one more time. So mean deviation as we have to calculate, and about the mean. Okay, so x bar already आपने calculate किया था just now. So let's substitute all the values and let's see. Okay, so x minus x bar क्या आएगा देखो. 30 आया था और यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 8 थी. So let's put up the value over here. So it will become 30 by 8. Okay, just solve it and divide this. So okay, so 8 3 times 24. Okay, 6, then okay, huh. Okay, then just divide and you will be getting the result. 8 3s are 24, then 6 आएगा, then again if you 60 it will become 6.75, it will be something around this, you will be getting the answer. Okay, and that's it. So about the mean we have discussed about the mean, how to calculate. Okay, let me show you again. Okay, so about the mean we have discussed this thing, what to do over here, है ना? And let's see then the next question, mean deviation about the median also. Okay, now about the median. So in this case जैसे mean वहाँ calculate किया था, अब median अपने को calculate करना है. Okay, and just simplify this. Okay, and you will be getting the mean deviation about the median. So median यानी कि you need to find out the middle value of the data. Okay, so middle value of the data find out करना है. Let's see. So, याद है मैंने मीन के लिए आपको बताया था, there is no need to arrange the data, but median it is necessary that we need to arrange the data. Okay, so let's arrange the data first of all. Let's arrange in any order, ascending or descending order. So ascending order देख लेते हैं. जैसे सबसे lowest value 34 है. Okay, then you will see 38 is there. Okay, after that 34 38 हो गया, then 42 44 42 44, then 46. Okay, then 48 is there. Okay, 40s वाला हो गया ना सारे. हाँ, 54, then 55, 54, 55, then 63 and 70. Okay, so I have arranged the data in the ascending order. Next thing, as I have to find out the median. So you remember median means middle value of the data. सबसे पहले n देखो क्या है, n यानी number of terms कितने. Let's count. So you will see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. n is 10. So n की value यहाँ पर 10 है. Okay, just remember in this, as I have already told you, in mean there is no need to arrange the data, but in median it is necessary that we need to arrange the data. Okay, just remember this point everyone. Okay, so let's come to the question. Yeah, so n is 10 over here, so यानी even है ना. इवन के लिए याद है मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज n by 2th टर्म को देखो, देन प्लस
n by 2 plus 1th term को देखो and divided by 2. So by this you will be getting the median. Okay. So you will see n की वैल्यू 10 है यानी कि 10/2 मीन फिफ्थ और सिक्स टर्म आ जाएंगे यानी ये दो वैल्यूज आपका मिडिल टर्म आप बोल सकते हो है ना. So let's see then 46 plus 48 divided by 2. So just simplify this and you will be getting the median. Okay, या median आपको बोला गया बहुत the median है तो है ना. So you will be getting the median something around इसको ऐड किया simply 94 by 2 that is 47. Okay, another thing we have, just a minute. Hmm. Another thing is that एक्स आई माइनस एम है यानी कि अब सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस में हम लोग मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पर मीडियन से सब्ट्रैक्ट करेंगे. मीडियन क्या है 47. ओके, लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो एक्स आई माइनस ऑफ मीडियन, लेट्स सी देन. सो देखो ये वाले सारे जो वैल्यूज जैसे हमने अरेंज करके रखा था, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट विद दिस. ओके, 34 माइनस 47 इट विल बी you will be getting 7 plus 6 that is minus 13. Okay, let me write it down all the values minus 13, then this will become 38 को 47 से सब्ट्रैक्ट करो. ओके, सारे टर्म्स को मीडियन से सब्ट्रैक्ट करना है जैसे एज पर द फॉर्मूला. ओके, सो दिस विल बिकम 7 plus 2 9 minus 9. ओके, देन दिस विल बिकम minus 5. नेक्स्ट हो गया minus 3. Okay, then minus 1. Okay, I hope it's visible all the values to everyone. 48 minus 7 ये 1 हो गया. Okay, then 54 minus 47 this will become 4 plus 3 that is 7. This will become 5 plus 3 that is 8. Okay, and this will be, you will be getting 13 plus 3 that is 16. और ये 70 से minus करो 47 को. Okay, that is 23. So I have written all the values. Okay, अब देखो xi minus median निकाल दिया, अब mod है, so you need to write down all the values positive ले लेना है. Okay, जो negative है उसको positive बना लो, that's it. Okay, this will become 13 9 5 3 1 1 7 8. Okay, then 16, then 23. Okay, I hope all the values are like correct. Let me check. 13 9 5 3 1 1 7 8 16 23. Yeah, now summation है, you need to add all the value. Let me do it over here. Summation है xi minus median यानी सारे values को आपको add करना है because that value you have to substitute. So let's add all the thing. 13 9 5. Okay, let me write it down over here once again. 13 9 5, then 3. Okay, then plus क्या है 1 1 7 8. 1 1 7 8 है. ओके, और क्या है देखो 16 23 16 23. So let's add all the values. So by adding you will be getting something around 86. Okay, just a minute, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 86. So now let's substitute the value, all the values in the formula. Let me write it down the formulas once again. As we are finding mean deviation about the median. Okay, ये ungrouped data के लिए. Okay, so formula क्या था, that is mod of xi minus of median divided by n, number of terms जितने हैं, है ना. तो ये आ गए 86. और number of terms की बात करें तो ये आप देखो, let me show you, हाँ so 10 है ना, so divided by 10, that's it, and you got the answer, it's 8.6. Okay, I hope having no doubt regarding this. So we have discussed both the questions about the median also or about the mean. Okay, तो दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस देख लिया. Okay, अभी तक हमने अनग्रुप डेटा वाला देखा था. Okay, let's see about group data also. Okay, over here mean deviation for the group data. Okay, तो ग्रुप डेटा में जैसे मैंने बताया था दो टाइप है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस. दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि ग्रुप अनग्रुप डेटा में सिर्फ वैल्यूज रहते थे, फ्रीक्वेंसीज जहां आ गई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज भी रहेगा, और कंटिन्यूस हो गया जिसमें क्लास इंटरवल्स रहेंगे. ठीक है, लेट्स सी. सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीडियन. ओके, देखो फॉर्मूलाज में ना जरा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं. यू विल सी ओवर हियर फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया, जस्ट फॉर्मूला वही है जैसे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार रहता था. अब यहाँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है यानी क्वेश्चंस में अब आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन रहेगा तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, और समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी यानी सारे फ्रीक्वेंसी का ऐड कर दिया, यू हैव टू डिवाइड बाय दिस एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस इन. ओके,
I hope everyone understood. Have regarding this, having no doubt. Mean deviation we have seen about the median and about the median and mean, these two formula. So let's come to the question. जैसे मैंने बताया था एक एक formula पे based एक एक questions देख लेंगे है ना. So over here, first step again to do the same thing, we need to calculate the mean. Okay, अब यहाँ तो frequencies है, ungroup data तो है नहीं कि सारे value को add कर दिया number of observation है ना. So what to do then? So you remember two methods that I've told you? या तो एक direct method है, यानी कि दोनों का product निकालो, summation fi into xi by summation ffi, ये. Otherwise assume mean method. चलो पहला method से ही solve करते हैं. पहला method मतलब, let me write it down, x bar that is equal to summation fi into xi divided by summation of fi. This is the formula that we know mean calculate करने के लिए है ना. So let me write it down all the values once again. So xi और इधर पे fi आ जाएगा है ना. Let me write it down all the values once again. 3 है, then 5 है, then 7 है, 9, 11, 13. Over here 6 है, then 8, 15 है, 25, 8 and 4. Okay, and you need to find out the product. So let's see then what will be the product. So 6 is 18, 8 5 is 40. So like this you can make a table है ना. और ये हो गया आपका 35 and 70 will become 105. Okay, और ये हो गया आपका 2 to 5. Yes. ये हो गया 88 and this will become 52. Okay. All right, so कहाँ गया क्वेश्चन. हाँ, सो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई ना, यानी कि सारे वैल्यूज को सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपने निकाला है, सो वी नीड टू ऐड ऑल द वैल्यू. सो लेट्स ऐड देन, सारे वैल्यू को ऐड करो तो वो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, जस्ट अ मिनट. समथिंग अराउंड 528 आएगा और ये आ जाएगा आपको 66. ओके, दिस यू विल बी गेटिंग अ 66. ओके, नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ओके, चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं. एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, fi into xi divided by summation of fi. Okay, let's substitute all the value. ये देखो क्या था, values 528 by 66. So 528 by 66. So यहाँ से आपका mean calculate हो गया. Mean you will be getting 8. Okay. Next thing, as let me write it in over here. Mean we got as 8. Okay. Next thing, you can see the formula xi minus x bar, यानी जो भी मिड वैल्यू आपको गिवन है, मिड वैल्यू मतलब xi, उसमें सारे को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, 8 से सब्ट्रैक्ट करना. सो लेट्स सी देन. ओके, लेट मी डू इट ओवर हियर. सो xi माइनस मीन यानी कि 8 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो जितने भी वैल्यूज है ये सारे आप देख रहे हो, सबको 8 से सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, 3 को 8 से सब्ट्रैक्ट किया, यू आर गेटिंग -5 है ना. 5 को 8 से सब्ट्रैक्ट किया, देन -3, दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम 1. 11 minus 8 will become 3. ओके, और ये हो गया आपका, इट विल बी 3 to 5 है ना. अब याद है मॉड है, यानी यू नीड टू लाइक टेक ऑल द पॉजिटिव वैल्यू. तो चलो पॉजिटिव मॉड यही बना लेते, सारे वैल्यूज को पॉजिटिव है ना. नेक्स्ट थिंग वी नीड टू मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो भी वैल्यूज आएंगे उसका प्रोडक्ट निकालना है. कहाँ चली जा रहा है क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू. सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देन आफ्टर दैट we need to find out the sum. So let's multiply them. Okay, so let's do it over here as well. I hope it's visible to everyone. Okay. So let me do it over here. So we have to multiply this two value. Okay, so let's multiply them. 6 5s are 30 आ गया, 8 3s are 24. Okay, then 15 is there, then 25, then 8 3s are 24, then 4 into 5 will become 20. Okay, how many values are there, you can count. 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ना. 1 2 3 4 5 6. Yes, now we need to add everything. So let's add summation, we need to add all the value and let's see what will be the result we are getting. Okay, so by adding this 30 24 15 25 24 20, yeah, it's correct, you will be getting 138. Okay, now let's substitute all the values. देखो ये formulas है आपके पास,
आपके पास सारी चीजें फाइंड आउट हो गई, यानी समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, और एन क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज। एन ये है 66, एन की वैल्यू क्या है 66, है ना, यानी समेशन ऑफ एफ आई है। अब बोलो। ओके, अब 138/66 सॉल्व करते हैं। लेट मी डू इट ओवर हियर, as we need to calculate the mean deviations. Okay, mean deviation. Okay, about the mean अभी आपने calculate किया x bar. Okay, so formula क्या था, summation frequencies है x. I'm writing the formula once again. Okay, mod is there, not the bracket. Let me correct it. Hmm. Okay, and divided by capital N. So let's see then, summation को multiply किया, so as we got as 138, ये देखो 138 आया था ना, और N आया था आपका 66. Just substitute the value 138/66 and you will be getting the answer. Okay, ये this will be something around 2.09 आपका आंसर आ जाएगा. Okay, I hope it's clear and having no doubt in this, right? Okay, so just remember mean कैसे calculate करते हैं for the discrete frequency distribution like this. Either you can find out by assume methods, assume mean method से भी आप find out कर सकते हो, या तो direct method, है ना, कोई भी. Okay, बस याद रखना calculation part में कोई mistake मत करना. Okay, I hope it's clear. Let's see then few other questions. Okay, I hope everyone got the same answer 2.09. Let's see then this question. Okay, now about the median. Okay, same question है, अब मीन के जगह पे मीडियन है. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द मीडियन. याद है मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे, मीडियन यानी मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा. ओके, अब यहाँ तो फ्रीक्वेंसीज भी है, तब क्या किया जाए, सो वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स सी देन, ये 6 एज इट इज रहेगा, देन इसको ऐड करते हैं 6 + 8. ओके, सो 6 + 8 विल बिकम 14, है ना, और दिस विल बिकम 29, 29 + 3, this will become 32, then this will become 32 + 8 will become 40, and 40 + 4 become 44. Okay, और एक चीज ध्यान देना, let me discuss this point. Okay, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, let me just a minute everyone. Let me read this. Okay, हाँ, मैं बता रही थी जो फ्रीक्वेंसीज है ना, इसका सम करोगे दैट विल बी 44. हाउ यू विल नो दिस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू रहता है ना, वो इक्वल रहता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. बाय दिस यू कैन करेक्ट दैट वेदर वट एवर द वैल्यूज यू गॉट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, है ना. सो लेट्स सी देन मीडियन कैसे कैलकुलेट करें. सो सबसे पहले एन देखो, एन जैसे मैंने बताया, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एन हो गया 44. जैसे ये 44 है, अब सम भी करके देखो तो फ्रीक्वेंसीज 44 ही आएगा. ओके, अब n/2 निकालो, n/2 क्या आएगा 22. ओके, सो मीडियन का क्या फॉर्मूला था, सो एज आई टोल्ड यू मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा. ओके, एन देखो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखते हो, सो यू विल सी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. सो फॉर दैट यू नो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज निकालते हैं, है ना. n/2 यानी कि आपका 22 आया, यानी 22th टर्म आपको देखना है और 23rd टर्म देखना है. ठीक है, n/2 + 1, 22 टर्म कौन सा होगा. ओके, देखो यहाँ पर 3 जो है वो 6 टाइम्स है, यानी 3 3 करके 6 टाइम्स सबको लिखना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका 6 है. उसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, यानी 5 14 टाइम्स आएगा. तो उसी तरह जो 23rd और 22 और 23rd टर्म जो आएगा ना, वो इस कैटेगरी के अंडर आएगा. ये जो 29 है ना, आपको बस ये देखना है 22 से ग्रेटर कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वो 29 आपको नजर आया. सो वी गॉट 22 और 23rd टर्म जो होगा वो 7 होगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो हेंस वी गॉट द आंसर. सो ये हो गया 7 + 7, 14/2, it means 7 we are getting the median. Okay, I hope it's clear, having no doubt regarding this. Okay, so we got the median as 7. Now let's come to the question. Formula, look at this, the formula xi minus median, यानी कि अब सारे values को आपको median से subtract करना है, फिर frequency से multiply करना है. So let me write down all the values one more time. Like this you can form a table.
एक बार और सारे टेबल को वैल्यूज को एकदम लिख लेते हैं. ओके, इट विल बी इजियर टू सॉल्व दिस. ओके, ये क्वेश्चन कहाँ चले जा रहे हैं. हाँ, so you will see 3 5 7 9 11. Let me write it down. 3 5 7 9 11. Okay, हाँ 13. ओके, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है देखो. 6 8 15, 6 8 15, then 3 8 4, 3 8 4. then as I have told you about the median है ना, तो xi माइनस मीडियन से आपको लाइक सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद मॉड निकालना है ना. मॉड यानी कि all the values you have to take it as a positive value. ओके, जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं. ओके, so xi median तो आपको पता है 7 है, so you have to subtract with 7. so let me make one more table. उसके बाद हम लोग मॉड निकालेंगे है ना. ये वैल्यू पहले सबट्रैक्ट करके लिख दे रहे. मीडियन तो 7 आया था, चलो मीडियन की जगह पे 7 ही लिख देते हैं. ओके, यहाँ पे 7 ही लिख देते हैं. ओके, so 3 minus of 7, it will become -4. then 5 minus 7 will become -2. ये हो गया 0. this will become 2. 11 minus 7 हो गया आपका 4. okay, then 13 minus 7 will become 6. okay, now you have to tell the mod. okay, so mod निकाल दो, यानी सारे values आपको positive ले लेना है. 4 2 0 2 4 6. okay, I hope having no doubt. okay, बार बार slide क्यों change हो जा रहा है, don't know what is the issue. हाँ, so next thing we have to multiply with the frequencies. okay, अब frequencies से सारे values को आपको क्या कर देना है, multiply कर देना. so let's multiply. and okay, and let's see, and after that you have to find out the summation. okay, तो ये देखो, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, fi into x है. लेट्स मल्टीप्लाई. 6 4 जा 24, 8 2 जा 16, ये 0 हो गया. 3 2 जा 6, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24. okay, now let's add all the thing and just substitute in the formula. that's it. okay, so by adding this, ये देखो सारे वैल्यू को ऐड करो, you will be getting summation of fi into xi minus of 7. okay, let's see then what will be the value you are getting. add karo. so by adding, let me tell you, 2 you can check once. okay, and just substitute all the values in the formula that I've told you. तो mean deviation का क्या formula था. so mean deviation about the median हम लोग देख रहे हैं. so we got 102. और summation of frequencies देखो, यानी सारे को जब ऐड करोगे, as I think we have already calculated ना, yeah, n that is 44. so you have to divide with 44 and you got the result. okay, so 102 by 44, by this you'll be getting the answer. so that will be something around 2.32. okay, I hope it's clear, having no doubt in this particular question. So as you can see, about the median की बात की गई थी, तो discrete frequency distribution है. so first step you have to find out the median, and after that subtract with each value with 7, and you will be getting 2.32. okay, let's come to the next thing about the continuous frequency distribution. तो अभी तक हमने discrete frequency देख लिया. discrete यानी कि फ्रीक्वेंसीज गिवन है फॉर ईच ऑफ द मिड वैल्यू. अब कंटिन्यूअस है, मतलब कि अब है क्लास इंटरवल्स गिवन रहेगा, तो उसके लिए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और मीडियन. सो एज आई हैव टोल्ड यू, द मीन डेविएशन मेथड, वो स्टेप डेविएशन मेथड वो अप्लाई करेंगे, है ना. so don't worry, I will discuss one more time everything. so let's see one question based on this. okay, you can note it down these steps. okay, सबसे पहले तो क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे. इन द प्रीवियस मिड वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, जो xi है इसमें तो गिवन नहीं रहेगा क्योंकि क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहेगा. सो वी आर डूइंग दिस बाय द स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट मीन. okay, and you can apply this formula then. okay, so let's come to the question over here. Here we have the question. so marks obtained means the class intervals are given. let me write it down all the value. 10 to 20 है,
देन 20 to 30 है, ओके, देन 30 to 40, देन 40 to 50 है ना, 50 to 60, 60 to 70, I think all the values I have written. Let me check once again. ये स्लाइड कहाँ दौड़ रहा है? आई होप इट्स विजिबल ना. ओके सो एज यू कैन सी, हाँ तो सारे वैल्यू है. नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसीज गिवन है. लेट मी राइट इट ऑन दैट एज वेल. कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 20 माइनस 10, या फिर आप मिडिल टर्म भी देख सकते हो. 50, 10 और 20 के बीच में मिडिल टर्म क्या है? 15 है ना. वो 15 हो गया, ये 25 हो गया, दिस विल बी 35, 45, 55 and 65. Okay, so we got this. Okay, now we need to calculate the mean. Okay, mean हम लोग यहाँ पर step division method से apply करेंगे. Okay, let me show you the formula each step. So first step is done, that I've told you. We need to calculate the class mark, या तो बोलो mid value, find out कर लिया. Now next step you need to find out assume mean. A की value क्या लेना है? Okay, so A जैसे मैंने बताया था, याद है आपको अगर तो the middle value of this mid point है ना, class mark का like middle value लेना है. Let's see which value is the middle one. सो यू विल सी, देखो यहाँ पर आप देखो मिडिल वैल्यू दो आ रहे हैं, 35 और 45 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 4 6 टर्म्स, या 35 या 45 कोई भी एक वैल्यू अज्यूम इन कंसिडर कर लो, है ना. चलो 35 अज्यूम इन कंसिडर कर लेते हैं. ओके लेट मी राइट इट डाउन. ए इक्वल टू 35, अज्यूम इन हम लोग 35 ले लिए. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हेयर एज वेल. ओके, यहाँ भी लिख लेते हैं. तो ए की वैल्यू हमने 35 कंसिडर कर लिया. ओके, नेक्स्ट थिंग एक्स आई माइनस ऑफ अज्यूमिन, यानी कि सारे वैल्यू में 35 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो 15 को 35 से सब्ट्रैक्ट करो. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द मॉड आल्सो. मैं तो सारे वैल्यू को पॉजिटिव ले लो. ओके, ये हो गया. 35 से माइनस करिए. 15 को 35 से माइनस किया, यू विल बी गेटिंग -20. ओके, यहाँ पर आपका -10 आ गया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 20. ओके, सो दिस विल बिकम 30. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट मॉड, यानी सारे डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. फाइंड द डेविएशन, उसके बाद हम लोग मॉड वाला देखेंगे, है ना. सो देखो सबसे पहले अब थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप भी हो गया. थर्ड स्टेप आप डेविएशन फाइंड आउट करना. क्लास साइज क्या है? डिफरेंस होगा, क्लास इंटरवल का होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच. चलो अब डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. लेट्स सी. Okay, let me write it down over here. So let's see then. This will be the next step. You have to calculate the deviation. Okay. Hmm. So we need to calculate the deviation. Di find out करते हैं. That is xi minus of assume in divided by h. Okay, h क्या है? H, let me discuss that also. That is the difference you can see in the class interval. That is 10. So you need to divide by 10. So let's me write it over here as well. Okay. Hmm. Divided by 10. So let's solve then and let's see what will be the answer. Okay. Hmm. तो -20/10, this will become -2. ये हो गया आपका -1, this will become 0, this will become 1, this will become 2, this will become 3. Okay, so ये हो गया. डेविएशंस भी आपने कैलकुलेट कर लिया. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. डेविएशंस भी कैलकुलेट हो गए. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप देखो, अब मीन कैलकुलेट करो. लेट्स पुट अप द वैल्यू इन द फॉर्मूला. ओके, वन मोर थिंग, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन है, यानी कि यू नीड टू मल्टीप्लाई विद दैट. सो लेट्स मल्टीप्लाई देन. ओके, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करो. फ्रीक्वेंसीज ये है और डेविएशन ये हो गया. ओके, 8 2 is a -16, this will become -6. Okay, this will become 0, then 5, 4 7 3 is 21, and we need to add everything. Okay, and after that you can substitute in the formula. Okay, so let's add all the value. Fi into di जब आप add करोगे, you will be getting, let me check whether it's correct or not. 5 4 21, yeah,
So this will be something around 8. And how to add? Just look at this. -16 है, -6 है. सबसे पहले तो ये ऐड करोगे, है ना? This will become minus of 16, और ये 6 हो गया आपका, minus 22, -22, देन +5, है ना? तो देखो +5, देन नीचे वाला जो टर्म है पॉजिटिव है, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एट द एंड यू विल बी गेटिंग 8. ओके, I hope this is clear. Now let's put up all the values in the formula, because we need to calculate the mean. अपने को mean find out करना है सबसे पहले. Let me write it over here. क्या formula तो याद है? Assume mean. Assume mean क्या है? 35. Let me write it down the formula once again over here. Assume mean plus summation of fi into di. Okay, you can see. Let me show you the formula once again. Okay. देखो, a plus fi into ti divided by frequencies into h. Okay, so let's see then. n क्या है? यानी frequencies को पहले भी उसको ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय h. ओके, assume in आप देखो तो 35 आ गया था. So just I'm substituting all the values in the formula. Okay, that's it. So frequencies को जब ऐड किया, you will be getting 8, और frequency को जब ये total ऐड करोगे, so let's see this also by adding what you will be getting, it will be 40. Okay, ये 40 आ जाएगा. Yes. Okay. Yes. And h क्या है? h आप देखो तो यहाँ 10 आ गया था, so just cancel out. You can see this will be cancel out. Okay, and 37 will be the mean you will be getting. Okay, so mean आ गया आपका 37. Okay, now the next step, as we got the mean, अब next step है formula को आप देखो. आपको mean deviation find out करने के लिए we need to subtract with x bar. So let's see then. Let me write it down over here. So xi और x bar यानी कि आपका 37. So you have to subtract with 37. So let's see then. And after that you need to find out the mod, यानी सारे values को positive ले लेना है. xi क्या है? xi यानी कि ये mid point. Okay, तो mid point में आपको 37 को subtract करना है. So 15 minus 37 be getting 12, 2, 8. Okay, I'm telling you the approach calculation I think you will do. Okay, so like this you'll be getting by subtracting. Now you have to find out the mod. Okay, mod find out करना है. Then the next step you have to multiply with the frequencies also, जैसे formulas के according आप देख रहे हो. Let me do it over here in the next slide. So as we got frequencies, you have to multiply with that. Okay, so by this x bar है ना? हाँ. ओके, सो ये देखो जो आपको फाइंड आउट हुआ है, ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, इसको मॉड फाइंड आउट करेंगे, यानी सारे वैल्यू पॉजिटिव. उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना. फ्रीक्वेंसीज कहाँ है? ये वाला, यानी 8, 20 माइनस 22, ये मल्टीप्लाई करना, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन ओवर हियर. ओके, तो ओके, these are the values you will be getting. 40, 36. Okay. hmm. Okay, so finally I have written all the values. Okay, by multiplying frequency with this. Okay, you can see जो frequency से multiply करके सारे values यहाँ मैंने लिख दिया. Okay, now you need to add all the thing. Summation find out करना है. So let's add all the value. So by adding you'll be getting something around 554. Okay, n क्या है? Now just I'm substituting all the values in the formulas, है ना? So ये आ गया 544 and divided by n, यानी कि summation of frequencies. sum क्या था? frequency आपने यहाँ already calculate किया था, that is 40. Okay, so you have to divide by 40 and hence we got the answer. Okay, so mean deviation about the mean भी हमने calculate करना सीख लिया, that is 13.6 will be the answer you are getting. Okay, so ये हो गया आपका discrete frequency distribution वाला. So about the mean देखें, अब about the median भी देख लेते हैं. Okay, सो डू द सेम थिंग. देखो हर बार सेम अप्रोच है. ओके, बस आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है, नथिंग एल्स. ओके, सो लेट्स सी देन. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी अगेन क्लास इंटरवल के फॉर्म में वैल्यूज रहेंगे, फ्रीक्वेंसीज रहेगा. एंड अबाउट द मीडियन बोला गया, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना? और उसके बाद तो लाइक ये फॉर्मूला सब समझ ही रहे हो कि अगर मीन रहा तो एक्स बार हो जाएगा, मीडियन रहा तो एम रहेगा, है ना?
सो मीडियन निकालना तो ऑलरेडी आपको पता है, आप 10th ग्रेड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो लेट्स अप्लाई दीज स्टेप्स वन बाय वन. क्लास मार्क फाइंड आउट किया जाए, है ना. चलो लेट्स सी देन. क्लास इंटरवल दैट इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. लेट मी राइट इट डाउन ऑल द वैल्यूज वंस अगेन. 95, 105. ओके, देन 105, देन 115 है. ओके, यू कैन मेक श्योर कि जब भी इस तरह से टेबल हो गया ना, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना एक बार. सो दैट विल बी द इजियर टू ऑल एवरीवन, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज आल्सो. सो इस तरह से रहेगा तो इट विल बी इजियर टू कैलकुलेट. ओके, 125 टू 135 है, देन 135 टू 145 है, देन 145 टू 155 है. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज देख लिया जाए. फ्रीक्वेंसीज आपका 9 है, देन 13 इज देयर, 25 इज देयर, 30, देन 13 एंड 10. नाउ लेट्स फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, इट मींस फर्स्ट वैल्यू इट विल बी रिमेन सेम 9, देन 13 प्लस 9 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 22. ओके, 27 plus 2, हाँ 22. Then to 22, 25 plus 22, this will become 7, 47. Then this will become 7, 77. और ये हो गया आपका 80, 90, और 90 plus 10 will become 100. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गए. अब मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है. मिड वैल्यू जैसे मैंने बताया था, मिड वैल्यू या फिर बोलो एक्स आई, जो मिडिल वैल्यू रहेगा. फॉर दिस इट इज 110, फॉर दिस इट्स 120, फॉर दिस इट्स 130, ये हो गया आपका 140, एंड फॉर दिस इट्स 150. ओके, सो दिस इज द मिड पॉइंट यू विल से. नाउ यू विल से मीडियन अपने को फाइंड आउट करना है, तो फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास. एन सबसे पहले फाइंड आउट को देखो, याद है मैंने स्टेप्स बताया था. लेट मी शो यू. क्लास मार्क आपने फाइंड आउट कर लिया, एन फाइंड आउट करो, फिर एन बाई टू निकालो, मीडियन क्लास लेना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है एन बाई टू से ग्रेटर कौन सा है या इक्वल टू. ठीक है, so let's see then. First of all, let's find out n value of n, यानी कि we need to add the frequencies. So सबसे पहले add किया, so you will be getting the result. It will be something around. You can see I have told you something. Cumulative frequency का last value यानी 100, वही होता है frequency का sum. यानी ये 100 आ गया, n की value 100 है. Okay, so n is equals to 100. Now the next thing we need to find out the value of n by 2. So n by 2 देखो क्या आ जाएगा, 50. 100 by 2. Okay, so we got 50. Now you have to check in the cumulative frequency. Okay, cumulative frequency calculate तो किया है ना, हाँ. So यहाँ देखो 50 से greater या लगभग equal to 50 कौन सा नंबर है. So you will say 77 है ना, 77 है. So you can consider this will be the median class we can consider. Okay, let me show you why we are considering. Understood this? You have to check 50 आया है, तो greater than 50 या equal to 50 cumulative frequency कौन सा. So this will be considered as the median class. Okay, तो median class मिल गया. अब median का क्या 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 फॉर्मूला याद है. Let me change the color. तो median के लिए फॉर्मूला याद है. So just substitute all the value. Lower limit plus h क्या है, डिफरेंस देखो h क्या है, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट आप करो, है ना. हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा बताओ. द डिफरेंस इज 10, है ना. सो ये 10 है, सो h मल्टीप्लाई बाय n बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज. ओके, इसमें सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल बी गेटिंग द मीडियन. ओके, सो लेट्स मी पुट अप ऑल द वैल्यूज. आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीवन, all the thing. Okay, so let me change the color, just a minute. लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट बताओ एवरीवन क्या है. Tell me the lower limit. Yeah, so lower limit if you observe it's 125, so let me write it down. 125 over 50, that is n by 2 minus of a cumulative frequency, that is 47, and divided by the frequency, that is 30, and you have to multiply with h, that is 10. Okay, I think it's visible to all of you these things. Okay. hmm. Now just simplify and you will be getting the median, that's it. Okay.
you will be getting the median. Okay, so इसको जब find out करोगे, so you will be getting something around, let me write it down, 125 plus, ये देखो 0 0 तो cancel out हो गया, 3/3 भी cancel out हो गया, you will be getting 1, so median you will be getting 126. Okay, I hope it's clear, having no doubt till now in this particular question that we have calculated just now the median, that's it. Okay, so we got the median as 126. Now we need to subtract with xi minus of median. So let's find out that as well. Okay, let's do it over here. Okay, let me write it on one more time. xi की सारे values लिख लेते हैं. 100, 110, 120. Okay, 100, 110, 120. Okay, 130, 140, 150. 130, 140, 150. Then you have to, as I've told you, you have to subtract with the median. Median क्या आया था? आपने अभी calculate किया. Let me show you. 126 से subtract करना है सारे value को, है ना? Median क्या है? 126. So let's subtract then. 100 minus 126 ये हो गया आपका minus 26. This will become 100 से subtract किया minus of 16, है ना? तो ये हो गया आपका minus of 6, है ना? तो ये हो गया आपका 4. This will become, you will say 14, है ना? 4 और प्लस 10, है ना? हाँ 14, और ये आ गया आपका 24. ओके, सो और इसका मॉड निकाला, यानी सारे वैल्यूज पॉजिटिव ले लेनी है, तो ठीक है, ले लिया जाए. सारे वैल्यूज को पॉजिटिव कर दो. ओके, आई होप इट्स क्लियर, नो डाउट इन दिस. 14 24 है ना? 26 16 है, 6 है, 4 है, 14 है, then 24 है. The next thing we need to multiply with the frequency. Let me show you once again. Look at the formula. सब्ट्रैक्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी तो करना है. फ्रीक्वेंसीज आप देखिए जो मैंने लिखा है 9 13 25, इससे मल्टीप्लाई करिएगा. ओके, फ्रीक्वेंसी से अपने को मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स मल्टीप्लाई देन. सो फ्रीक्वेंसी सारे वैल्यूज प्रीवियसली वैल्यूज ऑलरेडी रिटन था, है ना? लेट मी शो यू. तो देखो क्या है ये वाला फ्रीक्वेंसी, 9 13 25 30, ये सारे को उससे मल्टीप्लाई करना है. ओके, otherwise let me write it down over here. 9 into 26. Okay, then let me write it down all the values. After that you will see 13 25 30. 13 है, 25 है. I am writing the frequencies first of all. Okay, all right. 9 13 25 30, 13 and 10. Okay, so this will be 13 and 10, and you have to multiply with each of the value that is already written over here. 16, then 6, then 4, then 14, then 24. Okay, find out the value, add all the values, because you need to find out the summation. Okay, let's see what will be the result you are getting. Okay, let's find out the summation. So summation nikalo, and you remember the formula that I've told you, mean deviation ka. Summation of all this, let me write it on one more time. The formulas, fi into xi minus of m और divided by में n था ना? हाँ ना, यानी फ्रीक्वेंसी का सम. सो जब इसको सारे को ऐड करिएगा तो यू विल बी गेटिंग 1134 कुछ आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया. और n क्या था, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके क्या वैल्यूज आ गए थे. देखिए ये स्लाइड किधर चले जा रहा है. n तो 100 आ गया था. सो लेट्स डिवाइड बाय 100. आई थिंक यू गॉट द आंसर नाउ. दैट इज 11.34, राइट? So like this you have to solve this. Okay, so simply as I've told you, remember the formula. That's it. Okay, I think having no doubt regarding this in this question, you can able to solve this type of question, right? So both the thing I have discussed for, ये था आपका continuous frequency distribution का. About the mean वाले भी questions देख लिए, about the median वाले भी, ये वाला. Okay, all right, so I hope everyone got the same answer. Okay, so let's see then. Now let's come to the next topic. We have discussed about mean deviation, the entire thing. Now अब रह गया variance or standard deviation. So let's cover these things also. Okay, let me discuss this. Okay, देखो क्या है. So
Hmm. देखिए, mean of the square of the deviation from the mean is called the variance, is to be denoted by this symbol. And the variance of n observation x1 x2, suppose करो observations given है, it is given by this form, so you can note it down. देखो, xi माइनस एक्स बार तो आपने फाइंड आउट करना सीखा ही, आपने देख ही रहे थे मीन डिवीजन में अपने को फाइंड आउट कर ही रहे थे। वेरिएंस में क्या थोड़ा डिफरेंट है, फॉर्मूला में स्क्वायर कर दिया एंड डिवाइडेड बाय एन करना है, तो ये हो गया वेरिएंस, इससे निकलेगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? सो व्हाट एवर द वेरिएंस यू हैव, जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। सो वेरिएंस की जो भी वैल्यू है स्क्वायर रूट कर दिया, so that is standard deviation, you can see over here. Okay, and what is the shortcut method? Okay, sometime there is no need to solve by this variance okay, that is xi minus x बार आपने देखा ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करें। शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो बाय दिस, जो भी मिड वैल्यू क्या है उसका समेशन कर दो बाय n माइनस ऑफ जो भी मीन आया उसका स्क्वायर। You can apply any of the formula as your wish. Okay, so let's see then few questions based on this also over here. Find out the mean, standard deviation and variance of first 10 multiples of 3. Okay, तो सबसे पहली बात 10 multiples of 3 क्या क्या values हो जाएंगे, ध्यान देना। Let me use the pen, हाँ, just a minute, I hope, yeah, now it's working. Okay, so as in the question, you have to find out mean, standard deviation and variance of first 10 multiples of 3. मल्टीपल ऑफ थ्री 10 लिखना है। मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब क्या क्या वैल्यू, यानी 3 हो गया, 6 हो गया, 3 का टेबल आप बोलो, 3 6 9 12 है ना, 15 18, सो लाइक दिस अप टू कहाँ तक जाएगा, 30 तक। 10 मल्टीपल्स बोला है ना, ओके ले लिया। तो यहाँ जो आपने जो वैल्यूज देखा, तो ये तो आप बोलोगे, क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ। सो मीन कैसे कैलकुलेट करना है, तो मीन तो आपने ऑलरेडी सीखा है। आई थिंक यू कैन एबल टू कैलकुलेट द मीन, है ना। मीन तो कैलकुलेट इजीली कर पाओगे, एक्स बार जैसे कैलकुलेट करते थे। ओके, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 10 है, सो यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। सो रही बात वन मोर थिंग, एक बात याद है, अगर वैल्यूज डिफरेंट रहता तो यस वी नीड टू ऐड ऑल द वैल्यू, आपको ऐड करते, सारे वैल्यू को ऐड करते। पर यहाँ पर एडिशन से थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, कोई और तरीका है क्या ऐड करने का? सो यस, हियर वी हैव, यू रिमेम्बर एपी वाले चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने कुछ पढ़ा था क्या, सम ऑफ द टर्म्स कैसे निकालते हैं, यू रिमेम्बर द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द सम? लेट मी राइट इट डाउन, दैट इज सम ऑफ द टर्म्स, it yes sorry, okay, so you remember some of the terms कैसे कैलकुलेट कर, क्योंकि यहाँ भी आपको सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, so instead of adding each term, apply the formula, that will be the easier approach ना, that is n by 2 a plus l, याद है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 10 वैल्यू है, 10 by 2। ओके, a क्या है, यानी फर्स्ट टर्म, तो 3 आपको पता है, लास्ट टर्म भी पता है, यू विल बी गेटिंग द सम बाय दिस इजियर अप्रोच, है ना। ओके, सो रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज आल्सो, so 10 by 2 will become 5, है ना, और ये 33, so ये हो गया आपका सम, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 10, एंड जस्ट यू गॉट द आंसर, दैट्स इट, नथिंग टू डू। Okay, so that's why these formulas are also helpful, so you have to remember for other topics all the formulas also. Okay, so you'll be getting something around 165 by 10, and hence we got the result 16.5, we got the mean. Okay, so mean तो calculate हो गया as per the question. Okay, कहाँ गया, you got the answer, mean is 16.5. Now the next thing, you need to calculate the variance and standard deviation. So let's see then, variance कैसे find out किया जाए, you remember the formula just now we have discussed, variance कैसे find out करते हैं। Okay, so let's find it out, let me show you the formula once again. Okay, so let's apply the this method. Either you can apply the first approach or the second approach, whatever. Let's do it by the shortcut method. Summation of xi you need, यानी सारे values का sum divided by n, the number of terms, okay, and minus of x bar square, यानी mean का। xi का square, चलो ये सबसे पहले तो calculate किया जाए, है ना। So
एक्स आई का स्क्वायर यानी जो मिड वैल्यू है सारे को सम करना है, उसको स्क्वायर का सम करना है. ओके, सो यू लुक एट दिस द फॉर्मूला वंस अगेन. This one, summation of xi, we need to add all the values and minus of mean ka square. Okay, okay, just a minute, just a minute. I think there is a something missing in the formula. There is a square is missing over here. Okay, so you can check it out once. You can write it down one more time if you have written already the formula. So there is a square that is missing. That way, that's why I was thinking there should be xi square. Then you have to find out the sum. Okay, so जो भी आपका mid value दिया है सबका square करो फिर sum करो. So let's see then. Let's come to the question. Yeah. सो सारे जो वैल्यूज है ना उसका स्क्वायर का सम निकालना है. स्क्वायर का सम समझे मतलब किस तरीके से, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ओके, 9 स्क्वायर, सारे वैल्यू का सम का स्क्वायर करो उसके बाद सम निकालो और डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जो कि 10 है, और माइनस यानी कि आपका जो मीन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 16.5 होल स्क्वायर. ओके, आई होप इट्स all the values are visible to you. Otherwise, let me check out. विजिबल है ना सारी चीजें. हाँ, अब इसका सम का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें, लेट्स सी देन दैट आल्सो. सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स टेक सब में देखो समथिंग कॉमन. या 3 इज कॉमन बिकॉज इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3. so let's take 3 square as common. Okay, this will convert it into 1 square plus 2 square. ये ले लिया जाए इस तरीका से, divided by 10 and minus of 16.5 का होल स्क्वायर आप करोगे इट विल बी समथिंग अराउंड 272.25 आएगा. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व देन. ओके, और एक चीज यहाँ ध्यान दी ना, जो एन स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू क्या करें, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, लेट्स सी दैट एज वेल. ओके, दैट इज ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है तो इसके लिए आपको याद होगा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर यानी नंबर ऑफ टर्म्स से एन स्क्वायर रहा तो उसके लिए फॉर्मूला है n, n+1, 2n+1/6. So we can apply that over here. Okay, let me write it down over here. The formulas. Okay, यहाँ मैं लिख देती हूँ, note it down. Summation of n स्क्वायर होता है n, n+1, 2n+1/6. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 10 है तो 10 ले लिया जाए. So let me solve this over here. 10 हो गया, 10+1 हो गया 11, और ये हो गया आपका 22 प्लस 2 into 10 22, सॉरी 2 into 10 20 plus 1 21 आएगा by 6. Okay, so let's write it down everything in the this part. तो ये हो गया 3 स्क्वायर यानी 9, और ये हो गया था आपका 10, 11, 22, 22 नहीं 21 था ना, 2n+1. Let me erase this just a minute. Okay, so this will become 21. और डिवाइडेड बाई 6 भी था यहाँ, यहाँ देखो है ना अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और ये वाला 1 स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला यूज किया तो बाई 6 भी है तो ये बाई 6 हो गया, और माइनस ऑफ 272.25. now just simplify and you will be getting the variance. Okay, इसको कैलकुलेट किया, let me write it down over here. So we got the variance, you will be getting the variance that will be something around let me write it down all the values, 346.25 माइनस ऑफ 272.25 कुछ ये आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 74.25 will be the answer. Okay, and as per the question I think you have to find out the standard deviations also, so you need to find out the square root of this, that's it. Okay, let me write it on that as well. So standard deviation, let's calculate that as well. Standard deviation calculate किया, square root of this. Okay, so square root of 74.25 you will be getting something around 8.61. Okay, yeah, that's it. Okay, so I hope it's clear for everyone this to this question. Okay, so we have calculated the variance also, standard deviation also, and for mean you can see
how we calculated the sum. Remember the chapter AP arithmetic progression. Okay. I think it's clear, everyone, this question. Let's come to the next thing. So we have discussed variance and standard deviation again for the ungrouped data. Now for discrete frequency distribution also, let's check it out, this formula. Let's apply this formula in the questions, and after that, let's see one more about the continuous frequency, and that's it. Okay, so let's see this as well. Over here, here we have the question. All right, so let's see then variance and standard deviation of a discrete frequency distribution. Okay, so we have discussed already for ungrouped data, देख लिया that how you will calculate the variance and standard deviation. Now discrete frequency distribution अब यानी कि mid value के साथ साथ frequencies भी आ गए. Look at the formula, same thing, just in this frequency is added. Okay, frequency एक extra add हो गया, so we need to multiply with that. Okay, so noted down these formulas, that is variance, how you will calculate 1 by n summation of frequencies into xi into जो भी आपका मीन होगा उसका स्क्वायर करेगा, और in case standard deviation find out करना तो square root of the variance, that's it. Okay, so let's come to the question. Here we have the question. A discrete frequency distribution का variance standard deviation find out करते हैं. Let's see then. Let me like this you can form a table है ना. तो ये हो गया आपका सबसे पहले mid value. So let's see then what are the values. 10 is there, 15, 18, 20, 25, and the frequencies are 3, 2, 5, 8, 2. Okay, like this. Where is the question? Yeah, what is happening? Don't know. Okay, all right. Let's see then. So first step, as we need to calculate the mean. You can see the formula that is written over here. Mean कैसे find out करते हैं? We need to find out the product of these two. Let's see then. Let me change the color. तो fi into xi multiply करो. So let's see. You will be getting 30. 15 twos are 30. Okay, this will become 50, 160. 8 fives are 40, or 50, 90. Okay, so this one. And how you will calculate the mean, that you already know. Let me write it in the formula once again. That is summation of fi into xi divided by summation of fi, यानी frequencies को भी अपने को ऐड करना है, और ये भी. ओके, सो चलो देन पहले मीन ही कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना. सो लेट्स सी देन समेशन यानी सब सारे वैल्यू को जब ऐड करिएगा. Okay, so when you're adding all the value, you will be getting something around 360, और ये आपका आएगा 20. Hence we got the answer. Okay, so tell me everyone, what will be the mean you are getting? Okay, so it will be 360. Okay, 360 divided by 20. So 0 0 cancel, it will be 18 you will be getting. Okay, so mean आ गया 18. That's it. So we calculated the mean. ओके, नाउ एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार अपने पास फाइंड आउट करना है. एक्स आई ये है, एक्स बार आपको पता है ऑलरेडी. लेट्स सी देन एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार यानी कि 18, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर आल्सो. यू कैन सी, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर आल्सो. उसका स्क्वायर करिएगा, उसके बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसीज. ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू. Okay, let's see then. Let's subtract the mid value with 18 with the mean, and let's see what will be the answer you are getting. Okay, so 10 minus 18, it will become minus 8. Okay, then again this will become minus 3. This will become 0. This will become 2. 25 minus 18 करोगे, you will be getting 7, है ना. अब इसका स्क्वायर करो, that's it. 64 हो गया. 9, 0, 4, 49. Now multiply with the frequency. Okay, ये दोनों को multiply करो. 64 into 3 you will be getting 4 is a 12, carry 1, 18, 19, 192. ये स्लाइड को क्या हो रहा है? जस्ट मिनट एवरीवन. ओके, लेट मी चेक वंस. कहाँ गया वो वाला स्लाइड? लेट्स सी वेयर इट इज. ये था ना. नहीं. सो यस, लेट्स कम टू द क्वेश्चन. कहाँ थे हम? हाँ, मल्टीप्लाई कर रहे थे फ्रीक्वेंसी से. सो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, यू विल बी गेटिंग 192. ओके, एंड 62
मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इंटू 9 18, तो ध्यान देना है ना वैल्यूज, ये सारे वैल्यू को अपने को मल्टीप्लाई करना है इससे। ओके, सो 5 into 0, then 8 fours are 32, this will become 49 into 2, 9 2s 18, 98. Okay, so we need to add everything because we need to substitute the value. N क्या है? N तो daddy you already know over here. N is 20 and just that's it, you got the answer. ठीक है, सबको add किया, you'll be getting the answer. So let me show you over here in the next slide. Okay, so as you have to find out the variance, the formula is 1 by n. Let me write it down one more time, all the values. Okay, xi minus of x bar square. Okay, and we already calculated the summation. I think नहीं find out किया था ना, it will be summation जब आप calculate करेगा 340 आ जाएगा ये वाला. Okay, or divided by 20, that's it, and you will be getting the answer. तो चलिए बताइए 340 by 20 क्या आ जाएगा. So that is the variance, और standard deviation के लिए square root कर दें, that's it. 0 0 cancel out, 17. Okay, so 17 will be the variance you will be getting, and for standard deviation root over 17, that will be 4.12. I think both the thing we need to calculate now. Let me check out in this question. Yeah. So variance we calculate हो गया, standard deviation. So we got the answer. Variance is 4.12. Standard deviation. Sorry, variance is 17. Standard deviation is 4.12. Okay, I think no doubt regarding this. Just remember the formula, nothing else. Okay, and in every step you have to observe when you are calculating mean median. So for different thing, for ungrouped data there is a different approach. For if it is discrete group data, discrete for either you can apply direct method, assume mean, or you can say for the continuous frequency distribution, we are applying the step deviation approach to calculate the mean. So these things you need to keep in mind. Okay, just practice once the formula to calculate mean and median of 10th grade. Okay, so I hope it's clear. This one, let's come to the next thing, mean and just now we have discussed for discrete frequency distribution, this formula. Now there is this one is a, like you can say, uh, shortcut method. You remember how we calculated the mean by the two method, that is direct method एक होता था, जैसे कि fi into xi कर दिया, जैसे ये वाला मैंने बताया, तो इसमें वैल्यूज आप देखोगे ना थोड़ा लाइक लार्जर होते जा रहे हैं, पर अज्यूम इन मेथड से आपने देखा था वैल्यूज स्मॉलर होते जाते हैं. तो यहाँ भी वही है शॉर्टकट मेथड, हम लोग अज्यूम इन मेथड से सॉल्व करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, दिस वन, let's see. Let's come to the question. Let's solve this question. Variance and standard deviation we need to calculate by the shortcut method. Means we are solving by the uh, assume min method, है ना. तो ये d क्या है, d याद है, मैंने assume min के बारे में बताया था कुछ, xi minus a, वो वाला. ठीक है, चलो then let's see this question. So let me write it down all the values. So you can see ना, जब भी आपको इस टाइप के वैल्यूज होंगे ना, मेक श्योर कि आप इस तरह से टेबल बना लो column wise, that will be easier for the calculation. Okay, mistake नहीं होगा फिर. तो xi यानी मिड वैल्यू है 60, 61, 62, 63, 64, 65. I think all the values I have written na? 67, 68. Next we have the frequencies. So it is 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5. Okay, so as we need to calculate we are solving by the that method, that is the assume min method. So let's see then. First we need to find out di. यहाँ देख रहे हैं di, ये फाइंड आउट करते हैं di कैसे कैलकुलेट होता है. सबसे पहले आप देखो कि assume mean क्या कंसिडर करेंगे, है ना. So di, यहाँ पर देखो वैल्यूज कितने हैं, लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिडिल वैल्यू होगा, है ना. 9 है तो मिडिल वैल्यू क्या आएगा, 64. फोर टर्म्स इधर, फोर टर्म्स इधर, हाँ 64. सो यू कैन कंसिडर 64 इज द अज्यूम मीन. ठीक है, यानी कि xi में आपको अज्यूम मीन क्या है, 64 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 60 माइनस 64 किया, -4. ओके, दिस विल बी -3, ये हो गया -2, ये हो गया आपका -1, ये हो गया 0, 1
then 2, this will become 3, this will become 4. Okay, all right. So next thing we need to multiply with fi into di. देखो formulas आप देखो, ध्यान देना. fi into di अपने को चाहिए और di square भी चाहिए. So let's find out di square first of all. Okay, so di square यानी सारे values positive हो जाएंगे, square करोगे तो 16, then 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. Okay. Next thing we have, we need to find out fi चाहिए, fi into di and fi into di square I think ना. Let me show you. देखो fi di चाहिए और fi into di square चाहिए. So let's find it out both the thing. Okay. All right. हाँ. So fi into di, fi यहाँ है, di यहाँ. So let's multiply both the value. Okay. And let me write it down entire thing. Let me change the color. Okay, just a minute. Hmm. Okay, so we got fi into di. Just look at the both the value. Minus 8. This will become minus 3, minus 24, minus 29, then 0, then 12, then 20, then 12, then 20. Okay. di square देखो. fi ये हो गया, di square ये वाला. This will become 16 into 32. This will become 9. Okay, 4 12 into 4 48. This will become 29 है ना. ये हो गया आपका 0, then 12 40 36. हाँ, और ये हो गया आपका 80. ओके, कहाँ चला गया स्लाइड, जस्ट अ मिनट. Yeah, so this will become 80, I think 30 and 50. Yeah, 80. Okay, so we got all the values. Now we need to find out the summation we need to calculate. Okay, so summation of fi into dy we need. Let's add everything. Now we need fi into di also we need this thing. So we need to add both the values. Okay, add everything I mean to say. So let me check out once all the values are correct or not, or is there any mistake? 32, 9, 48, 29. Hmm. And another thing, yeah. Okay. So if you observe when you're adding everything, fi into d, you will be see you will be getting a zero at the end. Okay. क्यों? क्योंकि कुछ values negative है, कुछ value positive है, तो you will be see that सारे value cancel out हो जाएंगे. Next thing for this one, we need to multiply. You will be getting 286 something like this. ठीक है, ये 286 आ जाएगा. अब क्या है, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट अप करिए. वन मोर थिंग, यू नीड एन ऑल्सो ना. एन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स सी दिस एज वेल. ओके, let me write it down all the thing over here. As we are finding variance, so what is the formula? That is summation. We need fi into di square divided by n. Okay, and minus of summation fi into di. Okay, let me show you the formula once again. Look at this. हाँ, बाय एन इधर भी है. ओके, एन डिवाइड बाय एन है, एन हो गया यानी फ्रीक्वेंसीज काट करके स्क्वायर कर देना है. ओके, सो लेट्स सी, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर आल्सो, एन एंड होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ लेट्स पुट अप ऑल द वैल्यू. fi into di क्या आया था, समेशन आप यहाँ वैल्यू चेक करो. ये देखो 286 था. n क्या है, फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करोगे, यू विल सी by adding all this you will be getting, this is also you are getting as 100 है ना. ये भी आपका 100 कुछ आएगा, ये है ना. तो 286 बाय 100 और माइनस ऑफ, ये तो आपने देखा ही जीरो आ गया था, 0 बाय 100 होल स्क्वायर है ना. ये तो जीरो हो गया, नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पर बस आंसर आ गया 2.86 and minus of 0, it means the answer is 2.86. This will be the you got the variance. Now in the same way, if you are finding the standard deviation also, just do the square root, that's it. Okay, standard deviation square root of 2.86. So this will be, you're getting the answer as 1.69. Okay, so we got both the answer. Okay. Hmm.
Understood? I think no doubt regarding this. Just remember the formula. That's it. Nothing to do in this. Okay. This formula you need to remember. This is the shortcut method you can say. That is assume min method you can say. Or direct method is also there. You can solve by that also. But you will see ना जब fi into xi आप करोगे ना देखो 60 into 2 120 the value will become larger. यहाँ values इतना smaller हो गए. That will the easier approach to solve it. ठीक है? Okay. So here we got the answer. Let's move on to the next thing. Okay. Now next one more this topic is there that is the for continuous frequency distribution यानी कि class interval के form में variance और standard variation अपने को find out करना है तो ये shortcut method है. Let's see then. ओके डिवाइड बाय एच है एच यानी कि क्लास साइज देखो फॉर्मूला देखा आपने बिल्कुल सिमिलर है वहाँ डी आई था यानी जब अज्यूम मीन फाइंड आउट करते हैं यहाँ वाई आई ले लिया गया है क्योंकि बाय एच कर रहे हैं ओके और एच स्क्वायर है क्लास साइज रहता है यानी कि क्लास इंटरवल है सो क्लास साइज यू नीड टू कैलकुलेट दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसीलिए एच से मल्टीप्लाई करते हैं द ओनली डिफरेंस इन दीज discrete or continuous okay so let's see then few questions also in for this topic ओके सो लेट्स सी ये आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एक फॉर्म क्वेश्चन देख लिया जाए ये वाला है लेट मी राइट इट ऑन एवरीथिंग क्लास इंटरवल क्या क्या है देखो 0 to 30 है देन 30 to 60 देन 60 to 90 ओके देन 90 to 120 120 to 150 ओके सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू मिडल पॉइंट देखो या तो आप एक काम करो you can just subtract I mean to say add both the value 30 by 2 भी कर सकते हो this is also one of the approach upper limit plus lower limit by 2 है ना 90 by 2 that means 45 like this also you can find out okay so this for this it will become 75 for the another one it is 105 okay for this it is the look at the difference you can see all the value difference is 30 so like this it will be one 135 next is 165 another is 195 okay so we got mid value also next thing we are solving this by the step deviation approach the mean okay so we are solving by the step deviation approach okay so we need to know about the assume mean तो assume mean देखा जाए assume mean क्या है देखिए it means that the mid value middle term you can say of this mid point है ना middle term क्या है देखो ये वाला है ओके 105 है ना तो ये आपको assume mean ले लेना है ठीक है so you can consider this is the assume mean okay so xi minus assume mean divide by h is the class size h भी find out किया जाए यानी कि डिफरेंस देखो आप है ना डिफरेंस क्या है 30 क्या है क्लास इंटरवल में तो डिफरेंस क्लास साइज आप बोलोगे 30 है ना तो वाई आई लेट्स कैलकुलेट सो दैट इज एक्स आई माइनस ऑफ अज्यूम मीन देन डिवाइड बाई एच लेट मी राइट इट ऑन अज्यूम मीन भी आपने बताया आपने देखा 105 है ओके तो लेट्स सॉल्व देम मिड वैल्यू गिवन है 15 माइनस ऑफ 105 डिवाइडेड बाई 30 so इस तरह से सॉल्व करना है लेट मी राइट इट ऑन द आंसर्स यू आर गेटिंग फॉर दिस इट इज लेट मी शो यू जैसे मैंने क्या बोला 15 मिड वैल्यू है अज्यूम इन 105 है और डिवाइड करो क्लास साइज 30 से क्या आएगा देखो 5 गया 10 गया 90 बाई 30 दैट इज 3 ओके नेगेटिव साइन है तो -3 तो उसी तरह से सॉल्व किया यू विल बी गेटिंग -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस ओके नेक्स्ट स्टेप आपको बतानी है वाई आई स्क्वायर भी बताते हैं यूनिट स्क्वायर करो 9410149 लाइक दिस ठीक है स्क्वायर भी हो गया नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट आर द थिंग्स वी नीड देखो वी नीड एफ वाई वाई आई स्क्वायर चाहिए था वो कर दिया कैलकुलेट एफ आई से मल्टीप्लाई करो और लेट्स सी दैट आल्सो फिर एफ आई इंटू वाई आई करो है ना लेट्स सी
यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एफ आई इंटू वाई आई चाहिए और एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर चाहिए। ठीक है। ओके। ओके सो देखो एफ आई आपको ये है और वाई आई ये हो गया, वाई आई स्क्वायर ये हो गया। so let's find out all the values then. Okay, so you will be getting this one -6। ओके, ये भी आपका -6 हो गया, ये हो गया -5, ये हो गया 0, 3, 10, 6 है ना। और ये वाला से 18, 12, 5, 0, 3, 20, 18। ओके सो वी गॉट ऑल द वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट कैन बी डन। अब सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स है ना। सारे वैल्यू को पुट अप करो फॉर्मूलाज में। We need these thing, addition of this thing, sum of summation, or we need for this value. So let's add everything. Okay, and let me write it down over here. Okay, so when you're adding this thing, that is 18, 12, 5, 0, 3, 20, 80. So by adding all this, you'll be getting something around 76. Okay, और fi into yi को जब add करोगे तो you will be getting 2, है ना। क्यों? क्योंकि देखो -6 है, +6 जैसे मैंने बोला नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग 2। और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जब आप ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग दिस इज 30। okay, now let's put up all the value in the formula, that's it। okay, so we need x bar first of all, that is that is the mean you can say। okay, so mean we need, that is, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, this is the formula we have discussed for the variance and standard deviation, but in the question mean is also given ना, that we need to calculate the mean also। देखो यहाँ तो mean भी calculate अपने को करना है, variance और standard deviation में भी formula को apply करेंगे, जो formula मैंने आपको show किया। तो सबसे पहले तो mean कैसे calculate करते थे याद है? assume mean plus यानी कि summation of fi into yi divided by n multiply by h। okay, so let's find out mean first one। ये तो 105 था। okay, और you will see, just a minute, let me show you the previous slide। if I into y देखो 2 आ गया था और ये आपका n 30 था। ओके, तो ये 2 है बाई 30 और क्लास साइज भी आपने देखा तो वो भी 30 था। जस्ट सॉल्व करो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। ये 30 कैंसिल आउट हो गया, 107। okay, 107 will be the mean you are getting, and next thing we need to calculate the variance as well as the standard deviations also, let's see that as well। ओके, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज थे आपको याद है? लेट मी शो यू। देखो, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी क्लास साइज एन है ना, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन। सो लेट्स पुट अप ऑल द वैल्यू। चलो मैं दोबारा से एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। ओके, एन मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई। ओके, ये देखो वाई आई स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस ऑफ समेशन ऑफ एफ आई वाई आई जो भी है उसका होल स्क्वायर कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, अब सारे वैल्यू को पुटअप करो। एच की वैल्यू क्या है? एच है आपका 30 स्क्वायर कर दिया, एन है आपका वो भी 30 है ना। और नेक्स्ट वी हैव एन, एन आपका हो गया वो भी 30, आई थिंक कैलकुलेट किया था ना, हाँ एन 30 था, देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हो गया। और एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर की बात करें, ये हो गया आपका 76। ठीक है, ये हो गया आपका 76 माइनस ऑफ एफ आई इंटू वाई आई जैसे ऑलरेडी कैलकुलेटेड वही उसका स्क्वायर किया एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। यहाँ प्रोडक्ट है। ओके, ये तो देखो कैंसिल आउट हो ही गया।
Okay, so I hope everyone understood about this. I have already explained you, है ना? Mean find out किया, then after that, uh, like variance and standard deviation, the square root of that. Okay, that is 22476 का square root किया, so you will be getting 47.71. Okay, so like this, you have to write down the entire table you have to make it. So okay, class interval लिखा, frequencies. Okay, तो इस तरह से आप column wise सारे values लिखना, that will be easier. Okay, और जैसे मैंने बताया calculation थोड़ा ध्यान से करना है for this particular question, for this particular chapter, I mean to say statistics में. ठीक है. Let's see. So we have discussed about mean, variance, standard deviations. We have seen for ungrouped data, group data में भी आपका discrete देखा, continuous, सबसे like सारे formula पे based एक एक questions भी देख लिए. Okay. So let's see the next thing. Okay. So this is the last topic for today's session. Okay, that is the um, coefficient of variation. So how to calculate that? So this is the formula. Yeah, the yellow symbol, that is the standard deviation you need to calculate, divided by x bar, that is nothing but its mean, multiply by 100, and the mean value can't be equal to 0. Okay, so this is the formula. All of you note it down. Okay, so let's see then. Based on this formula also, let us see few questions. Okay, so here we have few questions I have taken. Let's see. So क्या है question में? Let's solve then. Okay, देखो क्या है. Coefficient of variance is given of two distribution at 60% and 75%. Their standard deviations are given this one. Okay. And you have to calculate the arithmetic mean. You remember just now we have discussed about the coefficient of variation. I'm writing in short. CV. ठीक है? Coefficient of variation उसका क्या formula देखा था? Look at this. Standard deviation divided by x bar, that is mean, multiplied by 100. Okay. This is the formula just now we have seen. Look at this. Okay. Now just let's substitute all the value and let's see. So यहाँ देखो coefficient of variation 60% है, 75%. So we have two values. Let's take CV1 ले लिया जाए पहले वाले के लिए. Okay, over here also let's take x bar 1 और यहाँ पर standard deviation 1. Okay, तो let's put up the value then. तो यहाँ देखो 60 है, that is equal to standard deviation is 18 divided by x bar 1 ले लिया है ना, multiply by 100. So by this you will be getting the answer of x bar 1, यानी कि arithmetic mean find out हो जाएगा in case when the coefficient of variation is 60% and the standard deviation is 18 on that case. Okay, let's see then. So you will be getting the answer 18 by 60 into 100 है ना. So 0 0 will be cancel out, 6 cancel out 18 three times, and this will become 30. Mean हो गया 30. Okay, in the same way let's see the other thing also. For the other, let me change the color. हाँ, so CV1 ले लो, 2 ले लो suppose. Coefficient of variation यहाँ पर आप 75% है ना. Let me write down the formula once again. तो उसमें आप लोग सेकंड वाले के लिए 2 ले लेते हैं, x bar 2 multiply by 100. Do the same thing in this also. Okay, so you will see, let me show you over here that we got you can see 75% is there, this one is 75, other one is standard deviation is also given, you can see. Let me erase this. Standard deviation is given as 15. Okay, this one is 15 and divided by the mean that you have to calculate. Okay, so simplify it and let's see what will be the value you are getting. So x bar 2, that will be 15 by 75 multiplied by 100. Okay, and just you will have to calculate that and you will be getting the answer. देखो कितने बार में cancel हो जाएगा. It will be 5 times है ना. This will be cancel out 5 times and 5 again 20 times. So you got the answer is 20. तो arithmetic mean देखो एक बार आपका 30 आ गया. Okay, as in this question find out the arithmetic mean था, बस एक बार 30 आ गया और एक बार 20. Okay, I hope having no confusion regarding this question. So this type of question you will see based on this topic. Just remember the formula, coefficient of variance, that is standard deviation, and divided by mean multiplied by 100. Okay. All right. Let's see a few other questions also based on this topic. Yeah. Let's see this also. Let me read the question. The following result shows the number of workers and the wages paid to them in two factories A and B. Number of wages are given 4,000, 5,000. Mean wages are given 3,500. Mean wages, you can see they are same in both. Okay, and the variance are given for the first one it's 64, other is 81.
Which factory has more variation in wages? So it is obvious. You can see by the I think no need to do anything in this. The answer is already there in the question. वेरिएंस आपको बताना है मोर वेरिएंस किस में है तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री 2 में 81 है देख रहे हो है ना that is the answer. Just write down in the statement form. Okay, so you can write it down in this form like variance of distribution, variance of distribution of wages in factory A. ओके और वेरिएंस को कैसे डिनोट करते हैं याद है तो सपोज कर लो हम लोग फैक्ट्री ए के लिए वेरिएंस इस तरह 1 ले लेते हैं स्क्वायर एंड दैट इज गिवन variance is given at 64. Okay, and in the same way you can say variance for distribution of wages in factory B it will be 81 and just by comparing you will be getting the result that which factory has more variance in wages है ना इसका 64 है सेकंड वाले का देखो 81 है तो जाहिर सी बात है सेकंड वाले फैक्ट्री का वेरिएंस ज्यादा है ओके let me write it on the next thing variance of distributions of wages in factory B. Okay, that is this one it is equal to 81 and hence we got the answer. Okay, यहाँ से आप variance निकाले तो standard deviation also you can calculate. Standard deviation will be square root of this that will be for the first one it will be 8 and for the next one it will be 9. Okay, and at the end as per the question more variance बोला गया था तो वो भी एक result आप आंसर statement के form में आप लिख दो hence let me change the color. Okay, hmm. So hence you can say the factory B, so the factory B you can say has more wages, more variance wages है ना हाँ more variation in wages and that is the answer. That's it. Okay, so simple question था ये वाला देखा आपने. So variance coefficient of variation जैसे जैसे मैंने बताया last topic था तो ये भी सारे topic cover हो गया. Okay, I think all the things are clear to everyone. Okay, and yes, as we have reached to the end of the session, that's all for today's session. Okay, and I hope you like the session. Okay, you hit the like button, share and subscribe. Okay, and tell me which topic next कौन से topic का मैं आपको video upload कर दूँ. So I will be discussing that entire topic. और next thing that ये तो topic मैंने discuss कर लिया mean median mode the entire thing जैसे मैंने बताया था starting में ही कि mean median आपको find out करना है. So you need to know the previous concept यानी कि क्लास 10 वाले फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कर लीजिए सारे. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो वो आप एक वीडियो देख लेना. उसके बाद देखो क्वेश्चन आप फॉर्मूलाज इजी है आप सिंपल कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. ऑल राइट दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई एम एंडिंग द सेशन. ओके टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय. ओके.